फ्रांस सर को शीट भी देती ठीक ओके मैम हो गया So good afternoon to all the children of 11th standard. Are you listening my voice? Student, this is the first chapter of your portrait of lady. You see here, children, Khushwant Singh, written by Khushwant Singh, notices these expression in the text, infer their meaning from the context. Just I am giving you explanation of the first chapters again, student, because you are not here, you were not present in the classrooms for the descriptions and explanations for the chapters also. So again, I'm giving the explanations and you're reading also. You see the chapter, the portrait of lady, notices these expression in the text, infer their meanings from the context. The thought was almost revolting, an expanse of pure with white serenity, a turning point, accepted her seclusions with resignation, a veritable bedlamps of chirpings, frivolous remarks, the sagging skins of the dilapidated drums. My grandmother's, like everybody's grandmother's, was an old woman. She was old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. मैंने उनको 20 years तक जाना था कि वो बहुत ही old थी और मुझे जानती थी. And people said that she had been once been young and pretty and even had a husband. वो बहुत ही pretty थी और उनके husband भी थे. But that was hard to believe. ये हम believe करने के लिए बहुत ही उनके लिए hard था. My grandfather's portrait hangs above the mantelpiece in the drawing room. उनके लिए portrait जो हम लोगों ने drawing room में हंग कर रखा था. ही वोर ए बिग टर्बन, जो दादाजी थे उनके, उन्होंने बहुत ही बिग टर्बन्स जो था यूज किया हुआ था. और आप देख रहे हैं यहाँ पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं बिग टर्बन्स इस तरीके से. जो वर्ड्स आप देखते हैं स्टूडेंट्स, आप उनको ग्रीन कलर से और अपने इसमें जैसे portrait, big turbans, and loose fittings cloths. Jesse words, pretty. His long white beards covered the best part of the chest. Chest पे उनके white beards थी, पूरी white beard थी, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of persons who would have a wife or children. ऐसा लगता नहीं था कि वो इतने एज के हैं, बहुत ही कम एज के लगते थे दादाजी जो उनके थे. और वाइट बियर्ड थी एंड चेस्ट ही लुक्ड 100 years old and he did not look a sort of person, कोई भी पर्सन के जैसे उनके नहीं था. He would have a wife or children, उनके wife और children. They looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother's being young and pretty, the thought was almost revolting. अक्सर ऐसे विचार जो थे जो मुझे रिवॉल्टिंग करते थे, जिसकी वजह से मेरे अंदर एक आंदोलन जो था वो हमेशा बना रहता था और मैं उस आंदोलन में आना चाहता था या मुझे वो स्ट्राइक करते थे और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते थे. Next, she often told us of the games she used to play as a child. बचपन में वो मुझे खेलने के लिए कहते थे. That seems quite absurd and undignified on her part. जो उनके parts मैच नहीं करते थे ऐसे games. And we treated it like the fables of the prophet used to tell. वो मुझे कुछ ऐसी कहानी, fairy की कहानी और कुछ ऐसे prophets की कहानी मुझे सुनाते थे जो मेरे लिए बचपन में प्रेरणादायी होती थी. She had always been short and fat and slightly bent. Short, fat or slightly thick. Her face was a criss-cross of wrinkles. झुर्रियों से भरपूर उनका फेस था. Running from everywhere to everywhere. एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती थी. We were certain she had always been as we had.
known her old as terribly old, that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. हम भी 20 20 years में जितने old नहीं होते थे वो उतने दिखाई हमें नहीं देते थे कहीं. She could never have been pretty. वो कुछ ऐसे pretty भी नहीं थे, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless with one hand resting on her vest to balance her stoop and other talents. That's of her rosary. और वो अक्सर एक हैंड्स को रेस्ट करते हुए वेस्ट को बैलेंस करते हुए हमें रोजरी जो रोज बैट्स ऑफ रोजरी गुलाबों की जो रोजरी थी उस पर हमें बताते थे. Her silver locks were scattered untidily, और जो उनका सिल्वर लॉक्स था scattered untidily over her pale puckered face. Pale मतलब डर सा फेस था उनका, उसके बारे में बताते थे. And her lips constantly moved in inaudible prayer. और माउथ जो लिप्स था inaudible prayer मतलब अंदर ही अंदर कुछ आजापा जाप करते रहते थे, कुछ कुछ प्रेयर करते रहते थे, ऐसे ओम नमः शिवाय ऐसे. She was beautiful. She was like the winter landscapes in the mountains. Mountains में जो landscapes रहते हैं, पहाड़ियाँ रहती हैं. An expanse of pure white serenity, जो सफेद पवित्रता और उनका प्रतीक रहते हैं शुद्धता का, और उसके बारे में बताया गया है. Within peace and contentment, जो शांति से सब सांसें लेते हैं, और कंटेनमेंट जिसमें संतुष्टता बनी रहती है, ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य जो था वहाँ का था. माई ग्रैंड मदर्स एंड आई वर गुड फ्रेंड. मेरी ग्रैंड मदर और मैं जो थे वो बहुत ही गुड फ्रेंड्स थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर. मेरे पेरेंट्स उनके पास छोड़ गए थे. When they went to live in the city, जब वो गए थे द सिटी, then we were constantly together. तब हम दोनों मेरी दादी जी एक साथ थे. She used to wake up me in the morning. मेरी दादी जी मुझे जल्दी उठा देती थी. Get me ready for the school. स्कूल के लिए जल्दी रेडी करती थी. She said her morning prayer in a monotonous sing songs. Early morning monotonous मतलब एक जैसी प्रेयर जो थी वो डेली करती थी. And sing songs with she bathed and dressed me in the hope. और वो कोशिश करती थी, वो जल्दी नहाती थी and dressed me, और मुझे भी जल्दी प्रेयर करती थी. Hope that I would listen and get to know it by heart. और by heart मैं उस प्रेयर को करता था. I listened because I loved her voice. मैं उनकी वॉइस पसंद करता था, but never bothered to learn it. लेकिन कभी भी उनको लर्न करने की कोशिश नहीं करता. Then she would fetch my wooden slate. मेरे पास जो लकड़ी की स्लेट थी, which she had already washed and plastered with yellow chalk. वो उस समय उसको स्लेट को धोती थी और येलो चॉक से और प्लास्टर्स जो रहता था उसको वो कवर अप करती थी. A tin earthen ink pot and red pen. और मेरे पास में एक टाइनी अर्गन इंक पॉट थी, छोटी सी शाई की बॉटल्स थी और रेड पेन थे. Tie them all in bundles. मैं उनको बंडल्स में रखता था and hand it to me, और अपने पास में. After breakfast of a thick slate stale चपाती, और मेरे पास बासी चपाती रहती थी with a little butter. उसमें थोड़ा सा मक्खन और शुगर जो था मैं उसके ऊपर लगाता हूँ. He went to the school. हम स्कूल जाते थे. She carried several stale chapatis. वो बहुत सारी मेरे लिए बासी चपातियाँ जो थी वो मेरे लिए गाँव रखती थी और गाँव के डॉग्स के लिए भी रखती थी. My grandmother always went to the school. मेरी ग्रैंडमदर हमेशा स्कूल जाती थी मेरे साथ, और फिर उसके बाद में went to the school and with me because the school was attached to the temple. क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल के बिल्कुल पास में था. स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है ना. ये अटैच टू द टेम्पल. द प्रिस्ट taught us the alphabet in the morning prayer. जो प्रिस्ट थे, जो बिशप थे, वो हमें वहाँ पे अल्फाबेट और जो थे मॉर्निंग प्रेयर के बारे में सिखाते थे. While the children sat in rows on other side of the veranda singing. जो दो बच्चे थे वो दूसरे रोड पे वरांडे में जाके बैठते थे. The alphabet or the prayer in the chorus. Chorus means क्या, एक स्मूथ और लय ताल में हम प्रेयर करते थे. My grandmother sat inside reading the scriptures. मेरी जो मदर थी
तो रीडिंग स्क्रिप्चर्स को पढ़ती थी ध्यान से लिखे हुए अक्षरों को। When we had both finished, जब वो दोनों फिनिश कर लेते थे स्क्रिप्चर्स, अब we would walk back, वापस आते थे। And this time we the village dog would meet us, हमें गांव के डॉग्स मिलते थे टेम्पल के पास में, और हम उनको क्या करते थे, फॉलोड अस ऑन होम ग्रॉलिंग्स एंड फाइटिंग, वो हमारे पर गुर्राते थे, हमसे लड़ते थे। और ईच अदर फॉर द चपाती, हम जो स्टील चपाती लाते थे वी थ्रू टू देम, हम उन पर फेंक देते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट, ये जो राइटर खुशवंत सिंह है, ये अपने दादा दादी जी के पास में रहते हैं, और इनके दादा दादी इनको ऐसे बिल्कुल जैसे गांव में हम रहते हैं वैसे उनके साथ ट्रीट करते थे, स्कूल जाते थे और दे सेंड फॉर अस, और स्कूल भेजते थे। तो उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया था, क्योंकि विलेज में जो स्कूल्स रहते थे वो कैसे रहते हैं जैसे आप देखते थे। Although we shared the same room, हम उसी में एक रूम में शेयर करते थे। My grandmother no longer came to school with me, क्योंकि मेरी ग्रैंडमदर ज्यादा लंबे समय तक स्कूल नहीं आ पाती थी। I used to go to an English school in a motor, जब वो शहर आए तो फिर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया राइटर खुशवंत सिंह, और मोटर बस से स्कूल में जाने लगे। देयर वर नो डॉग्स, क्योंकि अब वो ग्रामीण क्षेत्र नहीं था, विलेज एरिया, तो वहाँ पे स्टील चपाती डॉग्स नहीं देते थे, और वहाँ पर जो भी थे जो उनके वो थे डॉग्स भी नहीं होते थे। और उसके बाद में कोई भी स्ट्रीट पे एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी, और कोई भी जो भी कोर्टयार्ड रहती थी, स्पैरोज जो रहती थी और चिड़ियाएं जो रहती थी उनको कोर्टयार्ड्स हाई सिटी हाउस में थी, उनको हम देते। As the year rolled by, we saw less of each other. हमने देखा कि बहुत ही less of them. But sometimes she continues to wake up me. कुछ समय तक कि मुझे जगाया, get me ready for the school, और मम्मी मुझे स्कूल के लिए भेजती थी। When I came back, she would ask me what the teachers had. तो आपके टीचर्स ने आपको क्या होमवर्क दिया है, क्या मेरे को बताती। The portrait of lady written by Kushman Singh taught me. I would tell her English words and little things of Western science. वो जनरली मेरे स्कूल्स में जो टीचर्स थे वो इंग्लिश वर्ड्स, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था तो मोस्टली टीचर इंग्लिश में बोलते थे, और लिटिल थिंग्स जो भी थी वो वेस्टर्न साइंस के बारे में बताते थे, क्योंकि साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्कूल था, तो जितनी भी वेस्टर्न साइंस थी वो लर्निंग करते थे। लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसके बारे में हमें बताती है। क्वेश्चन आपको पूछते हैं स्टूडेंट्स, जैसे एक स्कूल्स में खुशवंत सिंह के मॉडर्न इंग्लिश स्कूल्स में किन सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये इंग्लिश वर्ड्स एक्सप्लेन करते थे, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताते थे, वेस्टर्न साइंस के बारे में बताते थे। ये आपके फर्स्ट सेकंड था, फर्स्ट पेज इंग्लिश, सेकंड इज वेस्टर्न साइंस एंड थर्ड इज द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल नंबर 4, ये तो पूरा क्वेश्चन पूछा है हमें कि खुशवंत सिंह जब स्कूल जाते थे तो उनके कौन कौन से सब्जेक्ट होते थे, तो आप बताएंगे वेस्टर्न साइंस का लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स है इंग्लिश पर। द वर्ल्ड विद बिंग राउंड्स एक्सेट्रा, और विश्व की जानकारी देते थे, ये जरूर बताएंगे, है ना। ये नंबर 6, द वर्ल्ड बिंग राउंड, दिस मेड हर अनहैप्पी, ये उनको अनहैप्पी प्रतीत करता था, क्योंकि ग्रामीण गांव में जब विलेज स्कूल था वहाँ ये सब लॉ ऑफ ग्रेविटी साइंस के बारे में नहीं बताते थे, बिल्कुल वहाँ पे फन लर्न बाय फन मेथड थी, इसलिए उनको ये सब न्यू लगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वेस्टर्न साइंस। तो ये दिस मेड हर अनहैप्पी, वो बहुत ही नाखुश थे। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माय लेसन, अब उनकी दादी और मदर उनके लेसन पे हेल्प नहीं कर सकती थी क्योंकि वो साइंस नहीं जानती थी, वो विलेज एरिया की थी, वो कम पढ़ी लिखी थी, तो उनको नहीं पता। दिस मेड हर हैप्पी, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, क्योंकि वो कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं गई थी, इसलिए वो इंग्लिश स्कूल के बारे में नहीं जानती, जिसकी वजह से वो बहुत ही स्ट्रेस रहते थे, स्ट्रेस्ड है ना। एंड दैट वर नो टीचिंग्स अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर, क्योंकि वहाँ पे जनरली भगवान के बारे में नहीं पढ़ाते थे, स्क्रिप्चर्स के बारे में, धार्मिक किताबों के बारे में नहीं बताते थे। One day I announced that we were being given music lesson, एक दिन मेरे को म्यूजिक लेसन बताया गया। She was very disturbed to her music had lewd association, lewd associations का मीनिंग एक एसोसिएशन के द्वारा उनको
मुझे सिखाया इट वाज द मोनोपोली ऑफ आर लॉर्ड्स एंड बैगर्स, जो बैगर्स रहते हैं, नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक, अच्छा नहीं समझते जेंटल फॉक्स के लिए। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन disapproval. She really talked to me after that. उन्होंने मुझसे बात की. When I went to the university, it was given a room of my school. It was given a my school. It was given at my school. So, my grandmother accepted her seclusions with resignation. जो मेरी grandmother थी, उन्होंने मुझे accepted her seclusions with resignation. ये सब चीजों को स्वीकारा. She really left her spinning wheels to talk to anyone. चरखा काटती थी, किसी से ज्यादा उनका वो नहीं था. Spinning from sunrise to sunset, she sat by the wheel spinning. पूरे समय वो व्हील स्पिनिंग्स करती थी, सनराइज टू सनसेट. ना रिसाइटिंग प्रेयर पोएम्स गाती थी. Only in the afternoon she relaxed the white to feed the sparrows. White she sat in the veranda breaking the bread into the bits. छोटी छोटी ब्रेड्स के टुकड़ों में बांटती थी. Hundreds of little birds collected down her clippings of vegetables, badlands of chirping. Badlands of chirpings का मीनिंग होता है चिड़ियों के चहचहाने की आवाज. Some came and perched on her legs, or some came and pressed on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never showed. है ना, उन्होंने कभी भी ऐसा शो नहीं किया. It used to be the happiest half hours of the day for her. पूरे समय वो खुश रहती थी. When I decided to go abroad, जब मैंने विदेश जाने के लिए सोचा, निर्णय लिया, further studies कि मैं आगे की तैयारी करूंगा. अब आगे की तैयारी करूंगा मैं, ऐसा सोच के मैंने किया. She came to leave me, but my grandmother could not even sentimental. वो बहुत ही sentimental जो थी नहीं थी. She came to leave me at the railway station. वो मुझे छोड़ने के लिए आई and show many emotion, और मुझे कुछ emotion लगे. Her lips moved in prayer. उनके moves जो थे वो prayer से लिपिंग कर रहे थे. Her mind was lost in prayer. उनका mind जो था वो prayer में lost था. Her fingers were busy telling the bats of her rosary. बैट्स ऑफ रोजरी, और जो बैट्स जो थी वो थी फिंगर्स जो थी वो जो थी बैट्स ऑफ रोजरी पर. मतलब एक फूल की माला होती है, मोती लगे रहते हैं उसमें, और उस माला से आजपा जाप किया जाता है, उसको बैट्स ऑफ रोजरी कहा जाता है. वो फूल जो रहते हैं तुलसी के फूल रहते हैं. Silently she kissed my forehead. उन्होंने मेरा forehead kiss किया. When I left, I cherished the most moist imprint as the perhaps the last sigh of physical contact, और last time उन्होंने physical contact किया था. But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for work. और उसके बाद उनके पास मेरे लिए कोई भी वर्ड्स नहीं. Why she clapped to me in her arms and I could her hair by reciting some prayer. हम क्योंकि अपनी जो prayer थी वो recite कर रहे थे. And even on the first day of my arrival, her happiest moments were with the sparrow, Frivolous rebucks, and she fed longest with Frivolous rebucks. ये मेरे जीवन के सबसे सुनहरे पल थे जो मैं स्पैरोज और उनके द्वारा किए गई मेमोरीज थी. In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the weapons of the neighborhood. वो घर जाती थी, कभी आज उन्होंने प्रेयर नहीं की. नेबरहुड की प्रेयर जो विमेंस थी उनको कलेक्ट नहीं किया. गॉट एन ओल्ड ड्रम्स एंड स्टार्टेड टू सिंग. और एक ओल्ड ड्रम्स लेके for several hours she thumped and saggings. और उन्होंने उसमें थम्स किया और उसमें जो था एक थाप देकर उसको. And skins of the dilapidated drums जो था, जो dilapidated drums जो होते थे उस पे skins पर थाप दी. And sang of homecomings of warriors, जैसे कि योद्धा घर को लौट के आता है उनके बारे में. She had to persuade her to stop to avoid
overstrainings. That was the first time since I had known her. She did not pray. उस दिन उन्होंने प्रेयर नहीं की. The next morning she was taken ill. अगली सुबह वो बीमार थी. It was a mild fever. उनको थोड़ा सा फीवर था. And the doctor told us that it would go, वो जल्दी चली जाएंगी. But my grandmother thought differently. मेरी grandmother ने थोड़ा सा सोचा मेरे बारे में. She told us that end was near. उनकी ग्रैंडमदर ने बताया कि अब उनका अंतिम समय आ गया है. She said that since only a few hours before the close of last chapters of her life, अब वो अपनी जिंदगी का लास्ट चैप्टर्स पे आ गई. She had omitted to pray. उन्होंने प्रे करने से मना किया. She was not going to waste any more time talking to us. और वो कोई भी अब वेस्ट नहीं करेंगे. We protested, but she ignored our protest. उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन she ignored our protest. उन्होंने कोई भी प्रोटेस्ट करने से इग्नोर किया. She lays peacefully, bad prayings and telling her bads. और बैठ पे बैठ के उन बैड्स रोज बैटरी से प्रेयर की. Even before we could suspect her lips stopped moving, the rosary fell from her lifeless finger. तुलसी की मोतियों की माला उनके हाथ से फिसल गई और गिर गई. And covered with a red sun and peaceful palace spread on face and we knew she was dead. और उनके चेहरे पर एक शांति की मुस्कान बिखर गई. And she was dead. और उनकी मृत्यु हो गई. We lifted her off the bed and it is a customary her on the ground and covered with her red shroud. After a few hours of mourning, we left alone to make arrangement for the funerals. और अगली सुबह उनके अंतिम संस्कार के लिए हम लोग अकेले ले गए. In the evening, we went to our rooms with a crude stretchers to the cremated. और उनको crude stretchers पे ले गए और cremated मतलब वहाँ पे उनको coffins में अंदर की तरफ रखे और वो करें. The sun was setting and had lit her rooms and verandas with a blaze of golden light. उनका बरांडा सूरज की किरणों से भरपूर था. We stopped halfway in the courtyard, all over the verandas and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. पूरी तरह वो dead थी और red shroud में से covered थी. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. और बहुत सारी जो sparrows थी फ्लोर्स में आ चुकी थी. There was no chirping. अब चिड़ियों की चहचहाट कोई आवाज नहीं थी. We felt sorry for the bird. हमने चिड़ियों को सॉरी कहा. And my mother fed some bread for them. मेरी मदर ने उनको कुछ ब्रेड दी. She broke into little crumbs. Was my grandmother used to and threw it to them. मेरी grandmothers ने उनके लिए बर्ड्स के लिए जो ब्रेड के पीसेस और जो भी उनके लिए ग्रेन्स थे वो सब उनको दिए. The sparrows took no notice of the bread. Sparrows ने bread की तरफ notice नहीं किया, ना bread खाई उन्होंने. And we carried my grandmother's corpse off. Then they flew away quietly. और birds जो थी वो quietly उड़ गई. Next morning the sweepers swept the bread crumbs into the dustbin. और next morning जो था उनके sweepers ने डस्टबिन में वो स्पैरोज की वो जो ब्रेड थी वो डस्टबिन में थ्रो कर. अब इसमें क्वेश्चन जो है चिल्ड्रन आपको understanding that the three phases of the author's relationship with his grandmothers before they left the country to the study abroad. जब विदेश जाने के पहले अब्रॉड जाने के पहले ऐसे कौन-कौन से इंसिडेंट उनके दादी जी के साथ हुए, ग्रैंडमदर के साथ में वो इंसिडेंट विलेज में जब वो थे, सिटी के इंग्लिश स्कूल में आ गए और लास्ट में वो कैसे. तो उनके जो इंसिडेंट घटनाएं हैं उनके लाइफ की खुशवंत सिंह की वो हमें उन पे लाइट करना है. As a study, the three reason why the author's grandmother was disturbed. क्यों 3 रीजन बताइए कि ग्रैंडमदर जो थी डिस्टर्ब थी. We started going to the city school. वो क्यों सिटी स्कूल चली गई. फिर क्वेश्चंस और दिए गए. The portrait of a lady, 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. 3 ways में रीजन बताइए कि ग्रैंडमदर ने बड़े में जब बड़ा हुआ तो कैसे अपने टाइम को स्पेंड किया. The odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. मृत्यु डेथ के पहले वो कैसा बिहेव कर रही थी. The way in which the sparrows expressed their sorrows with the author is grandmother's died. Sparrows चिड़ियों ने कैसा अपना एक्सप्रेशन दिया जब ग्रैंडमदर की डेथ हो गई. Talking about the text, the author's grandmother was a religious person. Yes, obviously.
जो राइटर थे खुशवंत सिंह, उनकी मदर जो थी रिलीजियस, धार्मिक थी। व्हाट आर द डिफरेंट वे, ऐसा आपको दिन भर रोजरी बैठ से ऐसे जो था वो दिन भर रोजरी बैठ से वो करती थी मेडिटेशंस, प्रेयर, रिसाइटिंग्स है। डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड द ग्रैंडमदर, क्या रिलेशनशिप थी ऑथर और ग्रैंडमदर्स की, देयर फीलिंग्स ईच अदर चेंजेस, क्या उनकी फीलिंग चेंज हुई थी। वुड यू एग्री द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन स्ट्रांग, क्या स्ट्रांग पर्सन थी कैरेक्टरी? Have you known someone like the author's grandmothers? Do you same the loss and regards? Which language do you think the authors and his grandmother used? कौन सी language use करती थी while talking to each other? Which language do you use to talk to elderly relative in your family? How would you say dilapidated drums in your language? Dilapidated drums means drums ऐसे जैसे warriors सब लौट के आते हैं तब हम उस drums को स्टिल पे करते हैं। And can you think of a song of a poem in your language to talk of homecoming? Yes, obviously, many songs are poems in our languages, home tongues and mother tongues languages. We generally talk of to the small kids. Working with words, our fingers were busy telling the bats of a rosary. उनकी fingers busy थी because of all the time she reciting the prayers and meditating and prayer and meditation because she was religious lady. I would tell her English words and little things of Western science and learning. Yeah, I would like to define English words and little things, gravity of science, Archimedes principle, and Western science. At her age, one could never tell. Yeah, at her age, one could never tell one thing. At her age, one could never tell. One could never tell, like because she was strong, she meditated, she she daily prayer. She told us that her end was there because she knew according to the age of her, she is her mind sketching the view and about her end was there according to the age. So given below, because doctor already declared your death, your end is coming. Given below the four different senses of the word tell, match make something known to someone spoken written words. Count while reciting, be sure giving information to somebody. One word type of questions. Notice the different sense of the word take. To take to something to begins to something like the way to take it or suddenly becomes sale. To take and advantages to take to go. The word hobbles means to walk with difficulties because the legs and feet are in bad conditions. That's it. Yeah, old days. Wrinkles, swaggers, stools, slopes. Noticing the forms of the words. I utilized in these sentences. My grandmother was an old woman. She had been old and wrinkled 20 years, and I've known her. So you explain about your grandmother. When you both had finished the woodwork together, the sun was setting. In this way, things to do also, children, talk with your family members about your elderly people who you have been intimately connected with you, who are not there with you now. Write a short description of someone you like. Understanding the text notes are very important. A task cover the entire text and help in summarizing the various phases of the autobiographical accounts and are based on the fact present. Ask the student to read the text silently. Yes, we ask the student read silently because while reading, we underline below the words also. Text silently, paragraph by paragraph. Get a quick oral feedback. So we generally ask to the student for oral feedback and what are the main points of each are underlines. For examples, para description, grandmother, grandfathers. At the end of unit, ask the student to answer the comprehensions question first orally, then in writing the point form. Village, schools, and cities. What are the difference between villages and cities? Okay, children. So we finish your this chapters today, and next chapter will continue. Next, Shirley Tolson's photograph. Shirley Tolson photograph chapter. First chapter is your portrait of lady, and all the question answer already we have discussed today. So thank you for joining me, students. And this is the explanation of the first chapter, portrait of lady, done by Kushwant Singh.
Try to note down all the answers already given in your textbook and the chapters. You can select right word and right sentences from the textbook. Any doubts and difficulty, you can ask me. Thank you.